you, ma'am. Honorable Minister, may I have permission to proceed, sir? Thank you, sir. Asto ma sadgamaya, tamso ma jyotirgamaya, mrityo ma amritam gamaya. Means, O Divine, lead us from ignorance to truth, from the darkness to light, and from the fear of death to fearlessness. Honorable Shri Rajiv Chandrasekhar ji, Minister of the State, Mighty, Shri Chintan Vaishnav ji, Mission Director, Atal Innovation Mission, Shri Nagarajan ji, Director, Ministry of Education, Government of Gujarat, Shri Ritesh Hata, Honorable Chancellor, Karnavati University, Shri Hiranmay Mahanta ji, Chief Executive Officer, IHAB, Government of Gujarat, all the friends from the media, dear participants from Tinkering Lab, 75 of you, the officials of Mighty, ladies and gentlemen, and my dear fellow students, Namaste and very warm good morning to all of you. We would like to express on the behalf of our Chancellor, Mr. Ritesh Hada, and all the hands of Karnavati University, a very heartfelt welcome to you, sir. In spite of everything, you took out time to bless us on the second day. I think you could not be luckier than that. Extremely thankful to you, sir. Very grateful that you came. Your words of wisdom, your encouragements have inspired us so much that the students of the design, our flagship school, have requested us that they would like to show their creations to Honorable Minister, and I'm happy to inform that Sir has agreed to take out 10 minutes time to have a look at the creations of the students. So thank you, sir. For that, we also would like to welcome Sri Chintan Vaishnav ji. I have an opportunity to have interaction with him, and he is a scientist and full of knowledge. Your words of wisdom always help us. Also very happy to inform that Sir has agreed to do a half-day workshop for our faculty colleagues in the month of January. So thank you, sir. Nagarajan, sir, thank you so much for all the way coming. A brief introduction about in India there are more than 1,000 tinkering labs. Out of that, 600 tinkering labs were approached, and from there the chosen participants who will be felicitated this morning are 75. So congratulations to all of you who made it to this day to receive their felicitation and award from the hands of Honorable Minister and Shri Chintan Vaishnav ji, Mission Director, Atal Innovation Mission. One thing I would like to just mention before I request the compeer and the proceedings to further go. You all know that in the keeping in line with the vision of Honorable Prime Minister and with the guidance of Honorable Minister for Mighty, the India has become a $3 trillion economy. But do we realize that 1% mistake in $3 trillion economy is going to cost us $30 billion US, and 1% mistake every month will accumulate into $360 billion US. That is equivalent to almost 70% of India's foreign reserve. Meaning, we cannot afford to make even 1% of mistake, and probably that is the overall aim of Atal Innovation Mission. So with this, once again, very grateful to all of you to make it. And thank you so much. Namaskar. Jai Hind, Jai Jai Garvi Gujarat. Thank you so much. And as I said, I would like to rush past the proceedings because there is a time constraint and we want to make sure that we don't get Rajiv to go to. We're very happy that is going to talk us about. So without further delay, I'm going to kindly ask Mr. Nagarajan sir, IAS Commissioner, Higher Education Gujarat, to address the audience. Let's have a round of applause. मेरा नमस्कार। केंद्र के राज्य कक्षा के मंत्री, स्किल डेवलपमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के मंत्री और गुजरात के अतिथि, हमारे गुजरात का और दूसरा कक्षा में MIT और अलग अलग संस्थाओं में बड़ा काम करके वापस देश में इनोवेशन मिशन चलाने के लिए अटल इनोवेशन के मिशन डायरेक्टर बन गए हैं डॉक्टर चिंतन वैष्णव जी, उपस्थित चांसलर कर्नाटक यूनिवर्सिटी आड़ा जी, CEO IHAB हिरणमय जी, इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर से आए हुए सब इनोवेशन क्लब के कोऑर्डिनेटर्स अध्यापक, अटल टिंकरिंग लैब से आए हुए सब अध्यापक मित्रों और ATL के सब स्टूडेंट्स और यूनिवर्सिटी के छात्रों, सबको मेरा नमस्कार। आज बहुत ही अहम दिन है क्योंकि अलग अलग जो धाराओं है इनोवेशन का, आज उसका एक
अच्छा सम्मेलन हो रहा है। और माननीय राजीव चंद्रशेखर जी गुजरात के लिए नए नहीं हैं। पिछले 2-3 महीने में उन्होंने गुजरात के लिए एक मिशन लिया था कि यहाँ के युवाओं को एक इंस्पिरेशन देना है और टेक्नोलॉजी के साथ न्यू इंडिया को कैसे बिल्ड करना है, एक मिशन लेके आए थे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की गाइडेंस से। और आज ये लगभग उनका 25वां प्रोग्राम है गुजरात में। एक तरीके का इनका मिशन का एक सिंगल जुबली हम मान सकते हैं। इसमें बहुत सारे हम मीनिंग अर्थ निकाल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी को कैसे युवाओं के साथ लेके जाएंगे तो उसका परिणाम कितना जल्दी प्राप्त हो सकता है, उसके लिए एक अद्भुत उदाहरण है। और हमारे पास नेशनल विजन जो सेट किया गया है कि जो इस दायका है, ये डिकेड है, टेक्नोलॉजी का डिकेड है इंडिया के लिए, तो वो डिकेड की मिशन और मैसेज लेके आए थे। वो अभी हम सबके समझ में बहुत अच्छा आ गया है कि अगर भारत में विकास होगा तो वो टेक्नोलॉजी के साथ होगा और उसमें युवाओं का और स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा भूमिका रहेगा। ये हम सबको ये माइंड में, विचारधारा में, डे टू डे की बात में ये इनकी 25 जो विजिट हुई है उससे हम सबको प्राप्त हुआ है। तो ये बिल्कुल हमारे लिए और एजुकेशन सिस्टम के लिए, इनोवेशन की सिस्टम के लिए गुजरात में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करती ओर से है। तो मुझे लगता है कि गुजरात की युवाओं की ओर से सर मैं आपको बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने युवाओं के लिए बड़ा प्रेरणा दिया। और ये शुरुआत है सर, आपने जो दीप कटा है इनोवेशन का और टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़ने का, इसमें ना केवल यूथ हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ टीचर्स हैं, हम जैसे ऑफिसर्स हैं और सिविल सोसाइटी, पूरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेकर सब लोग इसमें जुड़े हैं जिनको आपने प्रेरित किया है। तो आने वाले दिनों में काफ़ी इसका परिणाम आपने को देखने को मिलेगा। साथ में चिंतन वैष्णव जी आए हैं और अटल टिंकरिंग लैब्स जो इसका फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इसके साथ अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर जो कॉलेज लेवल पे इंक्यूबेशन को भी बढ़ावा देने वाला है। ये सब में नया ऊर्जा अभी पैदा हुआ है इनके आने के बाद और बहुत तेजी गति से इसका काम चल रहा है। तो इसके साथ सप्लीमेंट करते हुए गुजरात सरकार ने स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी 2.0 के अंतर्गत उसको ना केवल टेक्निकल इंस्टीट्यूशन और फार्मेसी के अलावा आर्ट, साइंस और कॉमर्स की बच्चों के लिए अलग से प्रावधान किया और स्कूल लेवल पे भी इसको एक्सटेंड किया। और स्कूल के बच्चों को जो अटल टिंकरिंग लैब से जो आइडिया लेके आएंगे, जो प्रोटोटाइप बना के लाएंगे, उसके लिए फंडिंग गुजरात सरकार की तरफ से मिलने वाला है। और हर एक जो स्टूडेंट है, टीम है, टीचर के साथ जो मेंटर होगा, उनको एक आइडिया के लिए कम से कम 20,000 रुपया तो मिलने वाला है। ये गुजरात गवर्नमेंट की पॉलिसी है। ऐसे मिल मिला के स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन, स्कूल, हायर एजुकेशन और टेक्निकल एजुकेशन को मिला के अगले 5 साल में 500 करोड़ का प्रावधान किया है, जिसमें पेटेंट फाइलिंग का भी सपोर्ट है कि डोमेस्टिक पेटेंट करना है 75,000 रुपीज़ है, 75,000 है। और इंटरनेशनल पेटेंट करना है, यूएसए में आपकी प्रोडक्ट को आपको पेटेंट करना है तो उसके लिए 1.5 लाख रुपया तक का भी सहाय इसमें मिल सकता है। और पूरा गवर्नमेंट युवान अपने काम से आगे बढ़े उसके लिए ही ये SSIP पॉलिसी के अंतर्गत किया है। तो जब इनोवेशन करने लगते हैं तो आर्ट, साइंस और कॉमर्स के बच्चों को कभी लगता है कि टेक्नोलॉजी में मेरा क्या लेना देना, मैं तो बीकॉम हूँ, मैं तो आर्ट्स हूँ। तो इनको भी एक हक मिलना चाहिए कि मैं भी इनोवेटर बन सकूँ और ये टेक्नोलॉजी का डिकेड में मैं कैसे मेरा टेक्नोलॉजी को मेरा आर्ट्स में, मेरा कॉमर्स में, मेरा साइंस में, मेरा बीएड में और मेरा लॉ में और मेरा ग्राम विद्यापीठ में मैं कैसे अमल कर सकता हूँ, उसके लिए गुजरात सरकार ने इनोवेशन क्लब का गठन किया था। एनीवन कैन बी एन इनोवेटर। ग्रास रूट इनोवेशन हमने देखा है, जिन्होंने कभी स्कूल देखा नहीं है वो भी बड़ा इनोवेशन करके किया है। आप सब लोगों के गांव में भी आपने देखा होगा कि एक अनपढ़ गवार हमको लगता होगा, लेकिन उसका जो इनोवेशन है वो बहुत लोगों को काम में लगता है। तो जो बच्चे आर्ट, साइंस और कॉमर्स में हैं, जिनका संख्या 8 लाख है और टेक्निकल एजुकेशन में 2 लाख है, तो क्या हम 80% की युवाओं को छोड़ के ये टेकेड और $5 बिलियन इकोनॉमी बना सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं बना सकते। उसके लिए इनोवेशन क्लब एक बहुत बड़ा माध्यम है और उसमें हर एक कॉलेज में 110 गवर्नमेंट कॉलेज और 357 ग्रेजुएट कॉलेज और ग्राम विद्यापीठ सब मिला के 500 संस्थाओं में हमने डू इट योरसेल्फ किट दिया है। ये डू इट योरसेल्फ किट में अटल टिंकरिंग लैब में जितना भी इनोवेशन का किट्स मिल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, ड्रोन, 3D प्रिंटिंग और
जो ब्लॉक बेस्ड कोडिंग है वो भी गुजराती में आप लोग कर सकते हैं। तो कोई ऐसा नहीं बोले कि अभी इंग्लिश नहीं आता तो मैं टेक्नोलॉजी के साथ काम नहीं कर सकता हूँ। तो इंडियन नॉलेज सिस्टम के साथ जोड़ते हुए और वर्नाकुलर इनोवेशन को बढ़ावा देते हुए जो इनोवेशन क्लब का पिछले 1 साल से अमल किया गया है, आज उसमें से कुछ इनोवेशन क्लब के कोऑर्डिनेटर्स भी इसमें शामिल हैं। तो हमको ये हर एक कॉलेज में, हर एक स्कूल में और हर एक यूनिवर्सिटी में जो इनोवेशन का मुहिम मिलेगा उसके ऊपर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का बेस हम बना सकते हैं। जब हमको नेशनल लेवल पे अटल मिशन, नीति आयोग और केंद्र सरकार की इतना सपोर्ट मिल रहा है तो हमको तो स्वर्ण अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम सहभागी बने कि ये अपॉर्चुनिटी को अपने स्टूडेंट तक लेके जाए। डांग, कपराड़ा, वलसाड़, दाहोद, कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, यहाँ पे बैठा हुआ कोई भी लड़का भी उसके पास कोई आइडिया हो तो उसको SSIP के अंदर 2.5 लाख रुपए हम दे सकते हैं। हायर एजुकेशन के अंदर उसका भी अभी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। तो इनोवेशन क्लब के कोऑर्डिनेटर्स का काम ये है कि आइडिया को बढ़ावा देके ये फंड उनको दिलाना है और वो आइडिया को लोकल प्रॉब्लम का लोकल सोल्यूशन लोकल यूथ के द्वारा टेक्नोलॉजी के माध्यम से करना है। तो गुजरात नेक्स्ट लेवल पे जाएगा, तभी हम भारत को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। और ये सभी मुहिम को एक साथ लाने का जो काम है IHUB और उनकी टीम ने कोऑर्डिनेशन किया और इस कल का जो सहकार है, कर्नावती यूनिवर्सिटी हमेशा इनोवेशन और ऐसे एक्टिविटीज में सहकार बना है। तो मैं उनको भी खास अभिनंदन देता हूँ। शिक्षण विभाग आप सबके साथ और भी इसको बढ़ावा देने के लिए तत्पर है और जो मुख्य अतिथि दोनों आए हुए हैं उनको फिर से स्वागत करके मेरा वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, Nagarajan sir. In addition, I would like to invite none other, ladies and gentlemen, than the director himself of Atal Innovation Mission. Ladies and gentlemen, put your hands together to Dr. Chintan Vaishnav as Business Sir. Namaskar, thank you very much. Good morning. हिंदी में बोला जाए, गुजराती में बोला जाए, कुछ नहीं बोला जाए। हाँ. So, first of all, it's wonderful to share the dais with Honorable Minister and my long-time colleague and friend Nagarajan, who has put in so much energy into the innovation ecosystem of Gujarat. Audience में भी काफ़ी friends हैं, हिरणमय CEOs of AICGU, SET, GPU, LCP से भी कोई हो रहा था, बिना नहीं मालूम, लेकिन but it's wonderful to be with all of you. More importantly, at least equally importantly, it's great to be with the APL kids who are going to be awarded today. It's because of you that we are all here in this venue, and the teachers and mentors जिनकी वजह से इनको ये awards मिले हैं. So नागराजन जी ने आपको numbers तो बता दिए हैं, तो मैं उस पर गौर कम करूँगा, but I want to underscore one very important thing that's happening today. Today, Gujarat is becoming the first state to give money to school children to take their ideas forward. That is what is happening today. और why is this important? So we are, see, you will agree that we are all in a business of building this innovation ecosystem. और इसका simple idea ये है, जैसे especially in the Western world, the saying is कि if you nail it, we will scale it. जहाँ इकोसिस्टम चलता है वहाँ अगर जो एक आइडिया निकल आता है तो इकोसिस्टम उसको बड़ा बना देती है. जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन समबडी इनोवेटेड social networking algorithm at Harvard University, it became Facebook. Or when somebody innovated a search algorithm at Stanford University, it became Google. Because somebody nailed it, ecosystems scaled it, right? So the idea is that what is going to be, how do we make a journey of an idea smoother? किसी के भी जहन में एक आइडिया आया तो उसकी जर्नी स्मूथ कैसे बने. कोई भी नया आइडिया में फ्रिक्शन तो रहने वाला है, लेकिन अननेसेसरी फ्रिक्शन कैसे कम हो पाए. So I think all of these initiatives that Gujarat has put together so ably, जो आज अटल टिंकरिंग लैब्स के बच्चों को जो ग्रांट्स देने का जो आइडिया है, उसके उपरांत जो इनोवेशन क्लब्स का आइडिया है, इंक्यूबेटर सेंटर्स का आइडिया है, ये सारे
एक रोड, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसके ऊपर से आइडियाज इजीली बड़े हो पाएँ, बड़ा इम्पैक्ट ले आ पाएँ वगैरह. सो आई एम रियली डिलाइटेड कि SSIP has taken this step to first take extend their policy to schools in terms of supporting them patenting, international patenting, all of it, and also extended their policy beyond science and technology, क्योंकि innovation science और technology में तक सीमित नहीं है. So I want to say one thing that we found at Atal Innovation Mission recently, जो अभी हमने publish किया है, कि अगर आप ये पूछें कि अगर मैं ₹1 innovation ecosystem में डालूं, तो मुझे कितने रुपए वापस मिलेंगे? गुजरात है तो मुझे यही बात करनी पड़ेगी. So what we have found is कि अगर आप ₹1 डालें इनोवेशन इकोसिस्टम में, अटल इनोवेशन मिशन का डेटा अगर आप देखें, तो टुडे वी हैव इन लास्ट 5 years we are getting a return of about ₹6 just on infrastructure. Okay? If you then take कि इसका spillover कितना होगा, social benefit कितना है, you take the normal accountancy practice, then for ₹1 invested, we are getting a return of ₹17. You can say that because we have so far invested in Atal Innovations Mission 1,500 crore rupees roughly. और अगर आप हमारे स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन प्लस बच्चों ने जो अटल टिंकरिंग लैब से जो बनाया है उसका पूरा टेंजिबल बेनिफिट्स को एडअप करें, आई कैन गो इनटू डिटेल्स सेपरेटली, इट्स अबाउट 8,700 crores. So that's about 5.56 times, right? And you divide that by 7% and you will get 17. So that is the mathematics. So this activity, first of all, is worth doing. That's one thing that now can be shown in numbers. And the other very interesting fact is आजकल अहमदाबाद में डेफ एक्सपो हो रहा है. डेफ एक्सपो में एक कंपोनेंट आईडेक्स का है, आपको शायद पता होगा. आईडेक्स इज अ प्लेटफॉर्म दैट अटल इनोवेशन मिशन बिल्ड फॉर द डिफेंस मिनिस्ट्री, इनोवेशन एंड डिफेंस एक्सेलेंस. अगर कॉस्ट बेनिफिट आप आईडेक्स का करें तो देयर रिटर्न इज ₹50 for every rupee invested. Because they didn't have to make the infrastructure, Atal had already made the infrastructure. तो ये आज जो गुजरात बच्चों को पैसे देने की बात कर रहा है ATL में, it's really the right step because it utilizes the existing infrastructure of 614 labs that are there already in Gujarat better. So really delighted to be a part of it. I want to end by saying, is this all surprising that ATL have created so much excitement? Maybe the answer is no, कि इतना surprising नहीं है. इसका कारण ये है कि अगर आप पूछें कि ATL में ऐसा क्या हो रहा है कि जिससे बच्चे इतने एक्साइटेड हैं, तो मेरा मानना ये है कि ATL एक ही जगह है कोई भी स्कूल में जहाँ बच्चे जो उनको प्रॉब्लम पसंद आते हैं वो प्रॉब्लम्स पे वो काम कर सकते हैं. तो ATLs में प्रॉब्लम्स कम बिफोर सॉल्यूशंस. अगर आप हमारे क्लासेस देखें, ट्यूशन कोर्सेज देखें वगैरह, वहाँ पे पहले आपको जवाब पढ़ा दिया जाता है, उसके बाद आपको क्वेश्चन पूछा जाता है. रियल लाइफ में उससे उल्टा होता है, पहले प्रॉब्लम आता है उसके बाद आपको सॉल्यूशन मिलता है. तो ATL is the only spot in a given school where problems come before solutions, and kids are really excited about that fact and they learn like crazy because once they are excited about a problem, something that they consider worthy, they are willing to put all their energy into this. And so it's not at all surprising that in ATL many kids are on their second, third startup, have applied for several patents. And then one final thing, very surprising trend, there are many ATLs across the country now where kids teach technology courses to teachers. Think about it. So kids teach technology courses to teachers. So I think this is a revolution this is a wave we have to ride.
Gujarat is doing a great thing by even putting more money to building their own ATLs. That's the conversation we are in the middle of, and supporting all these students way early in their life, so the entrepreneurial spirit of this state flourishes. So thank you very much. It's great to be with you. And now, of course, none other than our very own chief guest, Shri Rajiv Chandrasekhar sir, Ministry of State Electronics and Information Technology and Skill Development in the Commercial Government of India. Dr. Chintan Vaishnav, Mission Director, Atal Innovation Mission, my friend and fellow traveler, and Rajan ji, Dr. H.S. Suryavanshi, President of Punjabi University, and आप सबको और बहुत इम्पोर्टेंटली जो आज के 75 स्टूडेंट हैं उनको मेरा नमस्कार, उनको शुभकामनाएं, अभिनंदन। So first of all, thank you for having me over to speak. ये मेरे लिए तो एक बहुत अच्छी बात है जब मैं स्टूडेंट के सामने आता हूँ, स्टूडेंट के साथ आता हूँ, तो उनके साथ संवाद करता हूँ और इस नए भारत में जो नए अवसर क्रिएट हो रहे हैं उनके लिए उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन जब मैं करता हूँ मुझे बहुत खुशी होता है और आनंद भी आता है। कल ही अहमदाबाद में ही हमने भारत सरकार और गुजरात सरकार दोनों मिलकर एक प्रोग्राम लॉन्च किया, सेमीकंडक्टर इंडिया फ्यूचर डिजाइन, और उसका मूल कोर ये है कि आने वाले सालों में देश के एंटरप्रेन्योर, देश के स्टार्टअप, फ्यूचर के जो सेमीकंडक्टर्स होंगे, फ्यूचर के जो फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होंगे, तो आज तक 30 साल तक हम बाहर से खरीदते थे, बाहर के कंपनियों के डिज़ाइन हम खरीदते थे। आने वाले सालों में जो भारत में हो, गुजरात में, इसके लिए हमने कल एक प्रोग्राम लॉन्च किया था, उसका नाम था सेमीकंडक्टर इंडिया फ्यूचर डिज़ाइन प्रोग्राम। और आज 24 घंटे के बाद मैं आपके सामने हूँ, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हमारे स्कूल के छात्र, स्टूडेंट्स आर ऑल्सो ऑन दिस इनोवेशन। और इसका मैं थोड़ा ज़्यादा आपके सामने ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन संक्षिप्त में I will lay out some thoughts for you, especially the students and parents and teachers, about the journey that we are embarked on as a nation, and how important it is in this journey of New India, in this journey of India's decade, how important your role is as young students here. प्रधानमंत्री मोदी जी 15 अगस्त 2021 को 75वें साल इंडिपेंडेंस बनाने का हमने शुरू किया, उन्होंने एक फ्रेज कॉइन किया था, इंडिया डेकेड। इंडिया डेकेड का मतलब है the next decade is going to be a decade of technology opportunity, that is what India decade is। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया डेकेड का आर्किटेक्ट, इंजीनियर बनाएंगे, नींव लगाएंगे और उस बिल्डिंग को खड़ा भी करेंगे हमारे युवा, यंग इंडियंस। तो जो नागराजन जी कह रहे थे कि मैं 25 ऐसे प्रोग्राम कर चुका हूँ, यहाँ पर मेरा प्रेजेंटेशन का टाइटल है द डेकेड ऑफ अपॉर्चुनिटी। एंड यू आर स्टूडेंट्स, यू आर extremely fortunate, you are extremely lucky to be students at a time when we are moving into and stepping into a decade of opportunities. और इस decade of opportunities के लिए क्या जरूरत क्या है? What is the differentiator between somebody who is successful in this decade of opportunity and somebody who will not be successful? And the answer is skills. आप सब ऊपर कॉलेज के स्टूडेंट हैं, टीचर्स क्लास 2 के स्टूडेंट हैं, आप सब स्कूल की पढ़ाई करेंगे, कॉलेज की पढ़ाई करेंगे, डिग्री लेंगे,
ग्रेजुएशन करेंगे स्कूल से। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, इस आने वाले दशक में आपको सक्सेसफुल रहना है, सक्सेसफुल बनना है, और सक्सेस के लिए काफ़ी सारे नए अवसर हैं, बहुत सारे अवसर, बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटी। उसके लिए आपको स्किलिंग, आपको अपने पोर्टफोलियो नॉलेज में कोई स्किल का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और ये जो अटल टिंकरिंग लैब है, इसका नाम अटल जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी, जिन्होंने टेक्नोलॉजी की दुनिया में और टेलीकॉम की दुनिया में NTP 1999 में उन्होंने एक नया पॉलिसी लाकर एक जो रेवोल्यूशन उन्होंने शुरू किया था, उनके नाम पर ये अटल टिंकरिंग लैब बना। और ये अटल टिंकरिंग लैब इज द गेटवे टू टेक्नोलॉजी स्किल्स at the school level itself. So I will not speak very much more except to draw your attention to two things. 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अनवेल किया, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे इतिहास में, इंडिपेंडेंट इंडिया के इतिहास में सबसे डीप रूटेड रिफॉर्म है हमारे युवा पीढ़ी के लिए। Is the most defining reform that will shape the future of our students of India, youth of India, young Indians. और इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में पहली बार स्किलिंग, एजुकेशन और स्पोर्ट्स को हमने करिकुलम में इंटीग्रेट किया। इसका ये मतलब है कि स्कूल के बाद आपके पास अलग अलग रास्ते होंगे अपने लाइफ के अपॉर्चुनिटीज को रियलाइज करने के। आप हायर एजुकेशन भी कर सकते हैं, आप स्किलिंग के रूप में भी जा सकते हैं, आप स्पोर्ट्स में भी जा सकते हैं। और अगर आप स्कूल के 3 साल बाद वापस हायर एजुकेशन में आना चाहते हैं, हमने एकेडमिक बैंकिंग ऑफ क्रेडिट्स और नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क हम जल्द से जल्द लॉन्च करेंगे। 12वीं के बाद आपको हायर एजुकेशन नहीं परस्यू करना है, आपको स्किल के रूप में माध्यम से जाना है आगे। 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद भी आप वापस हायर एजुकेशन में आ सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए ये एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया है। मैं आपसे अनुरोध, रिक्वेस्ट, इंसेंटिवाइज, एनकरेज, आई विल अर्ज ऑल ऑफ यू, दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड टाइम टू बी अ यंग इंडियन। ऐसा इतिहास में ऐसा कभी मौका पहले आया नहीं। टेक्नोलॉजी के द्वारा आपके सामने इतने सारे नए अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, जैसे नागराज जी ने कहा, हमने देखा हुआ है फिनटेक में अपॉर्चुनिटीज, कंज्यूमर टेक में अपॉर्चुनिटीज। आने वाले सालों में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, सुपर कंप्यूटिंग, वो तो टेक्नोलॉजी के स्पेस में। और हर जो नॉन टेक्निकल एरिया में भी टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट होगा, टेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन होगा, वो भी एक emerging opportunity. So I will end here by saying that I wish, first of all, congratulations to all the 75 students, and I wish you more power, I wish you more strength. मैं सबको यहाँ पर स्टूडेंट्स अलग भी हैं और भी हैं, आप सबको मैं यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि ये आने वाले सालों में इंडिया का डेकेड को साकार बनाने, रियलाइज करने में, इस विजन, प्रधानमंत्री के विजन को रियलाइज करने में आप सब भाग दीजिए, अपने आप को स्किल कीजिए, और इस नए जो भारत का एक नया डेकेड ऑफ अपॉर्चुनिटीज में आप भी सफल हो, आपको आगे प्रॉस्पेरिटी पाए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद। Thank you so much, sir. So, we have time so that we can get Rajiv ji also to give a few words. It's fine because we're waiting for that, sir. Let's do that. Good morning, everyone. How many of you are forced to sit here? Raise of hands. Some of you. अच्छा, quick raise of hands. Hindi for Hindi language. Gujarati. English. So more hands for Gujarati. तो मैं हिंदी और गुजराती में मिक्स रखता हूँ। So I welcome all of you on a session on design thinking. बहुत सारे ATL के बच्चे हैं हमारे यहाँ पे आज। काफ़ी लोगों को डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में पता है, राइट? ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने डिज़ाइन थिंकिंग के बारे में पढ़ा है, सुना है, जाना है, देखा है? स्टूडेंट्स क्विकली,
जिनके सर्टिफिकेट बिना डिजाइन थिंकिंग के सेशन के लिए हैं उनको मैं वापस ले लूँगा. Any students who have been through design thinking sessions, teachers, students, आप लोग ऊपर, you are medical students, right? Okay. Has anyone of you heard about design thinking? Okay. Is there any volunteer? अच्छा. Quickly, can somebody tell me what's your assumption or impression of design thinking? Any student? आप में से किस लोगों ने यहाँ पे सेशन किया हुआ, राइट? यू हैव डन इट. सो व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजाइन थिंकिंग? कम है. लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड फ्रॉम यू. जल्दी. Basically, design thinking is all about whatever we see. Design thinking is all about whatever we see in our surroundings. Based on that, we think what can be a better solution for that problem. For example, one problem can be like Chintan Rashid said that they created a diagram and based on that they were creating electricity. So they found a problem and based on that they designed a solution. So this is all about design thinking. Thank you. What's your name? Arnav. Thanks, Arnav. હવે આ સમસ્યાને દૂર કરવા માટે તમારી પાસે શું ઉકેલ છે? લેટ અસ રેઝ તમે જ્યાં છો ત્યાંથી જ તમારે જવાબ આપવાનો છે. ઉપર બી અને નીચે બી જેટલા લોકો બેઠા છે એમાં જેમને બી જવાબ આપવાનો હોય વોલેન્ટિયર્સ વિલ કમ ટુ યુ. શું સોલ્યુશન હોઈ શકે આ પ્રોબ્લેમનું સૌથી પહેલાં? ક્યાં? upload the data of this food is waste, like is remaining, and we have to throw it. So there are many places like under the bridges or some roads where poor people sit or stay. So what we can do is in that app we can just add the data. If we can have a team and with volunteers, they'll then collect that food and distribute it to people right at that time. Because the thing is, people who are hungry don't see the time, like when they are served with food. They just eat it when they get food. So mostly the companies are say one, max till one. So we can gather that. So to cut things short, your solution is कि आपने एक ऐप बनाई है जहाँ पे फूड वेस्ट है एक कनेक्ट करके જેને આપણે આપી શકીએ એની. हाँ, with volunteers. The volunteers भी हसे जहाँ पर कितना food collect होचे, with कितना people हसे तो आपके कितना लोगों ने आपकी शकते. All that organized in an app. Got it. Any other solution? Before I do that, sir, you are here. You have been through this. So my request would be, why don't you join us? I think it would be a better session with your presence. Also like to add one point. Yes. Like for what solution we have thought with, in that app we are also giving a reward system that the ones which will donate more will get rewards and points, so that people will get encouraged to donate and such. So app is the solution which is connecting somebody who is generating waste to somebody who can consume. જ્યાં બગાડ થાય છે ત્યાંથી લઈને આપણે જેને ખાઈ શકીએ છીએ એને આપવા માટેની એપ બનાવી છે with volunteers. અને જે લોકો બી આ કરશે એમને રિવોર્ડ્સ મળશે. हाँ, the people जो donate કરશે એ લોકોને appમાં જ leader board હશે કે એમાં rewards. કોઈ બીજા સોલ્યુશન તમને દેખાય છે ક્વિકલી? અહીંયા બી જી સર. આમ તો આ રાંધેલું ખોરાક હશે, પણ છતાંય જો એવો કોઈ રસ્તો મળે કે એને આપણે કંઈ ખાતરમાં પરિવર્તિત કરી શકાય. ફોર ઇન્સ્ટન્સ કે હું ઘરે એવું કરું છું કે એક ખાડો કે એક ખૂણો એવો રાખ્યો છે ફળિયાનો કે ત્યાં આ થતું છે, અથવા તો જુદા જુદા પ્લાન્ટ્સમાં થતું છે આવું કંઈ. તો વેટ વેસ્ટને આપણે ફર્ટિલાઇઝર બાજુ લઈ જઈ શકીએ એ તમારું સોલ્યુશન છે. કોઈ બીજા? જી સર.
હલો, આપણે જે લગ્નમાં આવવાના છે ને એ લોકો પાસેથી કન્ફર્મેશન લઈ શકીએ છે કે તમે એક્ઝેક્ટ આવવાના છો કે નહીં, તો એટલા પ્રમાણમાં જ આપણે ખોરાક બનાવીએ તો પડે. સો એ બી એક સોલ્યુશન છે. હમણાં સુધી આપણે એવું જોતા હતા કે ખાવાનું બની ગયું છે એના પછીનો સોલ્યુશન જોતા હતા. આ સોલ્યુશન એ છે કે ખાવાનું બને એ પહેલાંનો સોલ્યુશન છે, સો દેટ વી કુક લેસ, બનાવીશું ઓછું તો બગાડ ઓછો થશે. દેટ્સ એન ઇન્ટરેસ્ટિંગ અપ્રોચ टू द प्रॉब्लम. बीजा कोई भी सर मेरा इसका जो अप्रोच है वो थोड़ा अलग है. मेरा ये कि वेस्टेज हो ही क्यों रहा है, उसके बाद हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं. सो जब हम लाइक अगर मैं भी किसी शादी या किसी फंक्शन में जाता हूँ तो बेसिकली हम खाना तभी ज़्यादा लेते हैं कि या दूसरी बार कौन आएगा, एक वो थॉट प्रोसेस रहता है. या फिर जैसे मैंने कुछ जूस के शॉप्स में देखा है, वो ग्लास की क्वांटिटी शेप वही होता है, लंबा दिखता है, बड़ा दिखता है, लेकिन उसमें क्वांटिटी कम होती है. तो किसी लोगों का वही थॉट प्रोसेस भी होता है, नहीं प्लेट में जो खाना होना चाहिए है ना, तो बाद में फिर उनको रियलाइज होता है इतना तो मेरे पेट में नहीं जाएगा. तो कहीं ना कहीं डिजाइनिंग ऑफ प्लेट्स में कुछ काम हम कर सकते हैं, तो है ना ऑटोमेटिक वो एपेटाइट वो भी खुश है. प्लेट का डिजाइन भी एक इंटरेस्टिंग अप्रोच है जिससे हम लोग वेस्ट कम कर सकते हैं. ये इट्स अ प्रूवन फैक्ट कि साइज ऑफ द प्लेट डिफाइन्स द साइज ऑफ वेस्टेज ऑल्सो. जी सर. સર કેલ્ક્યુલેશન કરી શકાય માનું છું ત્યાં સુધીમાં કે એક જાંબુનું વજન સોરી ગુલાબ જાંબુ છે, એક ગુલાબ જાંબુ કેટલા વજનનું થાય એ પ્રમાણે આપણા મહેમાન આવવાના છે એને કેલ્ક્યુલેશન કરી અને એ જ પ્રમાણે બનાવવામાં આવે તો કદાચ વેસ્ટેજ ઓછો થાય. ચપાતી 5 જોઈએ છે, 2 જોઈએ, 3 જોઈએ, કેટલી જાય એનું કેલ્ક્યુલેશન અગાઉથી કરવામાં આવે તો બધે ઓછું અને વેસ્ટેજ અટકી શકે. દરેક બાબતમાં કેલ્ક્યુલેશન અગાઉથી કરવું જોઈએ કે એક વ્યક્તિ કેટલું ખાઈ શકે, 5 ગ્રામ ખાઈ શકે, 10 ગ્રામ ખાઈ શકે. તો એક સોલ્યુશન છે કે આપણે બનાવીએ જ ઓછું એટલે વેસ્ટેજ ઓછો થાય આપણે જોઈ લેવાનું. અને લંચ પહેલા જે તમે આખું મેન્યુ અમને સંભળાવ્યું એટલે બધાની ભૂખ જાગી હશે. જી યસ. સો બેઝિકલી સાયન્ટિફિક રીતે આપણે શું ખાઈએ છીએ તે પ્રમાણે આપણું ફૂડ ડિપેન્ડ કરે. સો લાઈક ગુજરાતીમાં આપણે મીઠું ચટણી ખાઈએ બિકોઝ એના કારણે જે તમારા પેટના એક્સેટ હોય છે તે ઓછું રહે છે. તો આપણે શું ખાવું છે તે સાયન્ટિફિકલી પ્લાન કરીએ તેથી વેસ્ટેજ પણ ઓછું થશે. જે રીતે તમે તીખું પહેલાં ખાઈ લો અને મીઠું છેલ્લા માટે રાખો તો તમારાથી ભૂખ બનશે તો તમે કેટલું એનાથી ભૂખ ખાઈ પણ શકશો. એ રીતે બગાડનો નથી. ઓકે. સો આમાં એક અઝમ્પશન યસ મેડમ ઉપરથી કોઈને જવાબ આપવાનો છે કે બધા ઓપરેશન જ કરશો જઈને? Basically, when we go for a movie, there are ads showing that smoking kills. So there are some examples of patients who are having cancer when they smoke. So when we go to a wedding, there are a lot of videos for the pre-wedding shoot they are showing. So they can go to a screen and they can make a movie. If you waste the food, it is going to get wasted. It is not going into your stomach. So better you take less food so it doesn't get wasted. They can put a movie there that if the waste food is going. So simply putting, you have to aware the user કે તમે વેસ્ટેજ ઓછું કરો. બધાને અવેરનેસ હશે તો કદાચ કમ્બાઇન્ડ વેસ્ટેજ ઓછો. The video is going on right there, so they take less food in their plate. કદાચ ખાસે બી નહીં એવું બી બની શકે. લગનમાં તો આવું ના કરે. Just an idea quickly because I'm hungry right now. The thing is like we can make an app. The best solution to solve the problem is let's say for example we have an event here right now and we have some free food. So the app person can take a picture. You can just post on that app. If I'm passing by this app, it can give a notification that there is some free food over here. So everywhere in Ahmedabad or maybe in Gujarat, wherever a person is close to that food, whenever the person is posting about the food photograph of, you can also put about the expiry. Maybe this food will expire in an hour or something like that. So anyone can get it. So this is one of the way by which you can, wherever it is an event, maybe we have public event on that, you can post it on that app and all have access to that app. It's a free app. So it gives you notification that this food is very close to this and wherever you are passing by. Got it. Again, an app connecting both the ends of the. I think there was one response from here. We'll take this one and we'll move to the next slide. કેમ કે આગળ બી જવાબ આપવાના છે. Yes, I'll come back to you. We are belong from ગુજરાતી family. તો એવું પ્રેક્ટિકલી તો શક્ય નથી કે 1000 માણસનું રસોડું બનાવ્યું હોય એની રીતે આપણે મેનેજ કરીએ. બગાડ તો થવાનો છે. અત્યારની કન્ડિશનની વાત કરું, કંઈ રેક્ટિફિકેશન આવે તો વસ્તુ અલગ છે. અને જોડે હું ખેતી પણ કરું છું.
તો એક આઈડિયા એવો આવે કે વધેલા ફૂડ હોય તેનો આપણે લીલો પડવાશ તૈયાર કરીએ અને એ સ્ત્રોત આપણે ખેતરમાં નાખીએ તો ફર્ટિલિટી પણ ફાર્મની સારી થાય. એક આ ઉપાય ખરો. Last response from you, then we'll do the next one. जो भी वेस्टेज फूड होता है तो हम लेते क्यों हैं क्योंकि हम उसके पैसे नहीं देने हैं. तो अगर ऐसा प्रोसीजर हो कि अगर आप कुछ भी वेस्ट करते हो तो फाइन लगाना पड़ेगा. तो एक तो वो चीज़ हो जाएगी कि अगर फाइन का है तो कोई ज़्यादा नहीं लेगा थाली में, अपने अकॉर्डिंग ही लेगा. और अगर फिर भी वेस्ट हो रहा है तो वो अदर चीज़ें जैसे कि फर्टिलाइज़र है या किसी और तरीका है तो उसमें यूज हो सकते हैं. Thank you, madam. So penalizing a user is also one of the solution कि जहाँ पे आप पेनल्टी लगाते हैं. My request to medical students would be just keep your sound a bit low so that people who are interacting will be easier for them. So let's move to the next slide. हम आगे अभी हमने ये बातचीत की, हमने ये देखा कि ये एक प्रॉब्लम है. आपने काफ़ी सारे सॉल्यूशंस बताए बनाने से पहले, बनने के टाइम पे और बन जाने के बाद. जहाँ पे वेस्टेज पहले हम कम करने का ट्राई करेंगे, कम बनाए, और अगर वेस्टेज जब यूज़ हो रहा है तब यूज़ के ऊपर ध्यान दें ताकि वेस्टेज कम हो. और लास्ट में जब वेस्टेज हो जाता है तो उसके साथ क्या किया जा सकता है. तीनों स्टेजेस में हमने काफ़ी सारे इंटरवेंशन देखे. सर તમારે જો ઇન્ટરવ્યુ કરવું હોય તો મને આ છેલ્લા તમે આઈડિયા આપ્યો એ अच्छा लगा કે તમારો ચાંદલો તમે લગ્ન પૂરા થાય પછી નક્કી થશે તમે કેટલો બગાડ કર્યો છે એના ઉપર. So this is also one of the solutions. So this is one exercise જ્યારે આપણે design thinking માં we take a problem and cumulatively we brainstorm with a lot of users. So empathize અને design ની stages માં usually ask થાય છે. આને કરવા માટે ખાસા બધા લોકો આ રિયલ લાઈફ પ્રોબ્લેમ છે. જે કેસ આપણે લીધું છે this is a real life problem. So people who have tried to solve this એ લોકો 50 થી 100 જુદા જુદા જમણવારોમાં ગયા છે. એમને ત્યાં જોયું છે કે શું થાય છે. They spoke to I'll come back to. So એ લોકોએ કોન્ટ્રાક્ટર્સને વાત કરી છે, ઓર્ગેનાઇઝર્સને વાત કરી છે, જે છોકરા છોકરીના લગ્ન થાય છે એમને વાત કરી છે, એમની ફેમિલીઝને વાત કરી છે, અને આ જે વેસ્ટેજ આજની તારીખમાં નીકળે છે જે લોકો લઈ જાય છે એ બધાને વાત કરી છે. સો દે ટ્રાય ટુ એમ્પેથાઇઝ વિથ ધ યુઝર. એમને ગ્રાઉન્ડ ઉપર બધી વસ્તુઓની રિસર્ચ કર્યા પછી આ બધા સોલ્યુશન્સ ઉપર કામ કર્યું છે. વી આર નોટ ડિસ્કસિંગ ઓન ધ સોલ્યુશન્સ રાઇટ નાઉ, બટ આઈ એમ ટોકિંગ અબાઉટ ધ એમ્પેથાઇઝ સ્ટેજ કે જ્યાં તમને યુઝર કે પ્રોબ્લેમ જેમની આજુબાજુમાં છે એ જગ્યા ઉપર રહીને ઓબ્ઝર્વ કરવાનું હોય છે કે એકચ્યુઅલી પ્રોબ્લેમ છે ક્યાં, અને પછી તમે એને ડિફાઇન કરવાનો ટ્રાય કરો છો, જે બી આપણે આવનારી સ્લાઇડ્સમાં જોઈએ છે. યસ સર, તમારું કંઈ કમેન્ટ છે? હેલો, મારું સોલ્યુશન સર એવું છે કે માની લો કે સમૂહ લગ્ન જ ફરજિયાત કરવામાં આવે તો માની લો કે હું 10 લગ્નમાં જુદી જુદી વખતે જાઉં તો મારો ટાઈમ બી કન્ઝ્યુમ થાય. 10 વખતે જવું એટલે ટ્રાફિકમાં પણ હું એનરોલ થાઉં એટલે ટ્રાફિકનો પ્રોબ્લેમ પણ ઓછો થાય. એટલે એક જ લગ્નમાં એક જ વખત ખાઈ શકીશું. તો હું 10 વખત જઈશ તો 10 વખત કંઈક ના કંઈક બગાડીને આવીશ. એની જગ્યાએ જો સમૂહ લગ્નમાં જાઉં અને 10 જગ્યાનું એક જ વાર જો હું ઇન્વાઇટ થઉં અને ત્યાં જમણવારમાં જેટલું બી મારાથી ઓછું બગડે એક પ્રયત્ન એ મારું થશે. એટલે 10 વખતનું કન્ઝ્યુમ આમાં સરવાળો થઈ જશે. એટલે કેલ્ક્યુલેશન આ રીતે હોવું જોઈએ. બિલકુલ સર, આઈ એગ્રી ટુ યુ કે આની અંદર આ સોલ્યુશન છે જ કે જ્યાં આપણે એક ફંક્શનની જગ્યાએ 10 ફંક્શનની જગ્યાએ એને કમ્બાઈન કરીને એની બાય પ્રોડક્ટ આપણે સમય કન્ઝ્યુમ કરી શકીએ. 10 જગ્યાએ જવાનું એક જ વખત જવું પડે. આપણા પ્રોબ્લેમ ફૂડની છે, સમયની નથી. એટલે સમય સાથે બી એટલે બાય પ્રોડક્ટ બી ઘણું બધું આમાં મળે છે. બિલકુલ. તો ડિઝાઇન થિંકિંગમાં આપણે આ સ્લાઇડ જેવું કહે છે કે ઉકેલ પહેલાં સમસ્યાનું સંશોધન કરો. દેર ઇઝ અ વેરી ફેમસ સેઇંગ બધા અલગ અલગ લોકોના નામેથી આવે છે દેટ તમારે કોઈ બી પ્રોબ્લેમને સોલ્વ કરવાનું હોય અને તમારી પાસે 1 કલાક હોય તો તમારે 50 થી 55 મિનિટ પ્રોબ્લેમ સમજવા માટે આપવી જોઈએ. સોલ્યુશન ઇઝીલી આવી જશે અને સારો આવશે ઇફ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ પ્રોબ્લેમ વેલ. આપણી સાથે જે ATLના વિદ્યાર્થીઓ છે એ લોકો આજની તારીખમાં ખાસા બધા ઇનોવેશન્સ ઉપર કામ કરી રહ્યા છે. આ બધા જ ઇનોવેશન સ્ટાર્ટઅપ કે એન્ટરપ્રાઇઝમાં કન્વર્ટ થઈ શકે છે. ઇવન સબ્જેક્ટિવ કે એ કોઈ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી રહ્યા હોય. જો કોઈ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી રહ્યા હશે તો એનો તમને યુઝર બી મળશે, કસ્ટમર બી મળશે, એન્ડ ઇફ દેર ઇઝ અ કસ્ટમર દેર ઇઝ અ બિઝનેસ. સમરાઇઝિંગ. યસ સર, ઇન્ડિયા છે ને એ ક્યુઝનો દેશ. આપણી વસ્તી એટલી બધી છે
મોટાભાગના ઇન્ડિયાના કોઈ પણ પ્રોબ્લેમ લઈ લો, એજ્યુકેશન હોય, પછી લગ્નનું જમણવાર હોય, ક્યાંય પણ એડમિશન હોય, હોસ્પિટલ હોય, ઇન્ડિયામાં બધે જે પ્રોબ્લેમ છે ને ક્યુઇંગ પ્રોબ્લેમ. એટલે ઓપરેશન રિસર્ચની અંદર જો આ ક્યુઇંગ થિયરી જે અમારે આવે અભ્યાસમાં પણ આવે મૂકવાની, તો ક્યુઇંગ ટેકનોલોજી જે છે અથવા તો એની પર જેટલું કામ કરીએ ને તો મને લાગે છે કે મોટાભાગના ઇસ્યુ સોલ્વ થઈએ. દાખલા તરીકે આપણે કોઈ મેરેજની જો વાત કરીએ, મેરેજની અંદર જો કાઉન્ટર્સ વધારે હશે ને, વસ્તુ એની જ છે, મેં 700 માણસને બોલાયા છે પણ મારી પાસે જો 2 જ કાઉન્ટર હશે તો ત્યાં આગળ ફ્લો વધી જશે. ફ્લો વધશે એટલે સાયકોલોજીકલી બધા વધારે લઈ લેશે, બીજી વાર રાઉન્ડમાં ના આવવું પડે એટલા. પણ જો એના નંબર ઓફ કાઉન્ટર્સ વધારી દેશો તો વ્યક્તિ કદાચ એની ડિશમાં ફરીથી ઓછું લઈ ફરીથી આવવાનો ટ્રાય કરશે. એટલે મોટાભાગના પ્રશ્નો આવા વધારે છે અને ડિસ્ટન્સ બિટવીન જે કાઉન્ટર્સ છે એ પણ ઘણીવાર મિસમેનેજ કરેલું, નજીક એટલે ટોળ એક જગ્યાએ થઈ. એટલે ઇન્ડિયા છે ને મોટાભાગે ટોળાના પ્રોબ્લેમ ઇન્ડિયામાં દરેક જગ્યાએ. એટલે આપણે જે સોલ્યુશન હતું કે આપણે બીજી વખત ક્રિએટ કરવા ના જવી પડે, એના લીધે એક જ વખત કરાઈ જાય છે. ઇન્ડિયાના મોટાભાગના પ્રોબ્લેમ હું ફરી કહું છું જોશની કે મોટાભાગના ઇસ્યુ છે ને ક્યુઇંગ પ્રોબ્લેમ વધારે છે. સાહેબ હવે તો ક્યુ ખાસી ઓછી થઈ ગઈ છે. વેન વોઝ ધ લાસ્ટ ટાઈમ સમબડી સ્ટુડ ઇન અ રેલવે ટિકિટ ક્યુ? કોઈએ રેલવે ટિકિટની ક્યુમાં ઊભો રહેવાનું એક્સપિરિયન્સ કર્યો હોય છે એટલે બસ ટિકિટ. સો વેરી લેસ. આઈ થિંક ધોઝ ક્યુઝ આર ગોઈંગ બટ દેર આર સમ ક્યુ સ્ટીલ રિમેનિંગ. એટલીસ્ટ આપણી ટેકનોલોજી આપણને હેલ્પ કરી છે. આજથી આઈ થિંક 10-15 વર્ષ પહેલાં તમે રેલવે ટિકિટ લેવા માટે ક્યુમાં જ ઊભો રહેવાનું ઓપ્શન હતું. સો દેટ થિંગ ઇઝ ગોઈંગ બટ સ્ટીલ આઈ એગ્રી. એટલીસ્ટ અર્બન સ્પેસીસમાં સોલ્યુશન આવ્યું. સરે જે વાત કરી ક્યુમાં, મને તો એકચ્યુઅલી બુફે સિસ્ટમ છે ને એ જ બિલકુલ આઈ એમ નોટ એગ્રી વિથ દેટ. આપણે પહેલાં જે જમણવાર કે કોઈ પણ લગ્નમાં નીચે બેસાડીને બધા જમાડતા હતા તો વી આસ્ક દેમ કે તમને જોઈએ કે નહીં. અને અત્યારે તો શું છે, એમને પોતે રહેવાનું છે એટલે વી ઓલ મસ્ટ હેવ સીન કે લોકો છે ને પોતાની થાળીમાં આમ ઓવરલોડેડ આમ કાજુ કતરી હોય તો 10 નાખી લે અને પછી એમાંથી 5 આમ જવા દે. આમ દે જસ્ટ એનું જે હવે એ વેસ્ટેજ, અને અમુક વાર તો એ એવી રીતે નાખે કે અંદર પાણી હોય, કોઈ હાથ એમાં ધોયેલા હોય તો એને તો તમે એને ખાવા પણ ના આપી શકો. સો આઈ થિંક ધ સોલ્યુશન ઇઝ કે આપણે કંઈક આ પ્રથા જ જો થોડીક ચેન્જ કરીએ ને, because everyone feels that buffet system is very high profile kind of a thing something, but then Indian જે ઓરિજિનલ સિસ્ટમ હતી that was okay, કેમ કે એમાં જે વેસ્ટ થાય છે કે એ વધે છે, that is not wasted, but here it is actually wasted. I agree to you. In fact, the response of this survey, સાહેબ આપણે થોડું આગળ વધી પછી તમારી પાસે આવ્યું કે બુફે સિસ્ટમમાં વેસ્ટેજ વધે છે. ઇટ્સ અ પ્રૂવન ફેક્ટ. આપણી જે જૂની પંગતની સિસ્ટમ હતી એની અંદર વેસ્ટેજ ઓછા થયા છે, પ્લેટથી માંડીને બાકી બધી જાતના આવા ડેટા છે આની અંદર. સો આઈ એગ્રી ટુ વોટ યુ આર સેઇંગ. The next school that is going to be recognized is Bright Day School, Close Unit Vadodara. I repeat, it's Bright Day School, CBSE Unit Vadodara. I'm going to quickly read out the names. That's Manan Desai, Anant Mukherjee, Varna Markse. Bright Day School, CBSE Unit Vadodara, ladies and gentlemen. The next school is Baroda High School. Baroda High School. From Baroda, can you please have people coming in from Baroda High School? Baroda Marke, Sharvin Mane. This man is called Professor Sawan, Baroda High School. We go to the next state, which is Surat. Please give it up for GD Goenka International School, Surat. The names of the students are Vanita Singh, Jinal Master, Jia Hardeen Jain, and Hek Mawali. And Avira Kenya. We then go to Shri R.D. Khel, Jeevan Bharati Madhyamik Vidyalaya, Surat.
तालियां बजती रहनी चाहिए. These are some amazing work done by the students and contributions from the school. जादव मानस, भगत आकांक्षा, रुद्र डोरीवाला, राधा घासान and प्रथम खेर. Come back to Ahmedabad, Shanti Asiatic School, Ahmedabad, ladies and gentlemen. Let's hear it for Shanti Asiatic School, Ahmedabad. Nishka Lapsi and Jerry Sachdev. Thank you. Do we have representatives from Anand Niketan Maninagar? Awesome, very nice, awesome. Anand Niketan Maninagar, here's to your team and students. Moksha Chauhan, Reena Patel, Pushti, Jia, Ketri, Megh, Dhyan. Hiramani Primary School, Ahmedabad. All the way from, as they say, Khushbu, Gujarat ki Kutch, we have the Doon Public School, Bhuj. Let's hear it for Doon Public School, Bhuj. Sagar Bharadwaj, Sheshar Sarikrishna, and Diya Bhujbharti. We go back to Vadodara, New Era Senior Secondary Schools. Ladies and gentlemen, these are young children who have done some amazing work when it comes to innovation with, of course, the guidance of their teachers. New Era Senior Secondary School, Vadodara. Shlok, Manthan, Vansh, Raj, Harvi and Samarth, New Era Senior Secondary School, Vadodara. We also have two teachers to felicitate, just two teachers for the kind of amazing work they've done. One is Dipti ma'am from Navrachna Vidyalaya, Vadodara. Ladies and gentlemen, Dipti ma'am. A teacher called Johnny Abraham, Anand Niketan Maninagar. Let's hear it for Johnny sir. And a last minute entry that just turned up is MES Boys High School, Vadodara. So MES Boys High School, Vadodara, they've just come. Let's hear it for MES Boys High School from Vadodara.